नमस्कार और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज 15 अगस्त हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन आज़ादी सिर्फ एक तारीख नहीं है। आज़ादी का मतलब हर किसी के लिए अलग है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आज़ादी की जो अभी भी अधूरी है, बीमारी से आज़ादी, और एक ऐसे माहौल से आज़ादी जो हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाए। बिल्कुल आयुष्मान, freedom is not just freedom from colonial rule. It's also freedom from disease, poor sanitation and environmental challenges. और आयुष्मान, आज हमारे 12th year जो हमारा फिनाले है, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल है, यहाँ पे बच्चे आएंगे, we will have some fun activities, but more importantly आयुष्मान, आज हमारे साथ guests जुड़ेंगे are going to be guests who've been part of our campaign since 2014. So they played a very, very critical role. तो कुछ मज़े भी करेंगे, हम कुछ सीखेंगे. We have some special guests also joining us today. लेकिन let's look at some numbers, right? Because facts are important, numbers are important. So let's look at the good news first. The latest NFHS 6 report says that the greatest of the gains came in the sector of child health. Stunting is down by 17%. Severe wasting is also down by 32%. Institutional deliveries are at over 90%, and full immunization coverage for children aged 12 to 23 months rose to over 87%. लेकिन challenges अभी भी हैं. NFHS 6 indicates a dual public health burden. Obesity. In 3 years, it had grown from 22.9% to 27.3% among men, while among women from 24% to 30.7%. Remains problematic while malnutrition continues besides the onslaught of lifestyle diseases. Absolutely, and these numbers are only going up. Unfortunately, this survey, Ayushman, also shows a decline in exclusive breastfeeding among children under 6 months. 63.7%, which was in NFHS 5, it's gone down now in NFHS 6 to 55.8%. Now, we need to understand that breastfeeding is essential to prevent infant malnutrition, क्योंकि जब बच्चा the first 1000 days है, the first 6 months are very critical for a child's growth in every aspect of their life. Absolutely. इंडिपेंडेंस डे पर आज हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की। डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया पिछले 12 साल से सिर्फ एक कैंपेन नहीं, एक मूवमेंट रहा है। और बिकॉज ये एक मूवमेंट है, आइए हम सुनते हैं लोगों से, हमारे देश की जनता से, कि आज़ादी का मतलब उनके लिए क्या है। मेरे लिए फ्रीडम है कि मैं अक्टूबर नवंबर में भी दिल्ली जैसे शहर में आराम से घूम पाऊँ, एक साफ एयर हो मेरे लिए। आज़ादी का मतलब हाइजीन के हिसाब से मैं बोलूँगी साफ पानी। If we talk about health and hygiene, so the basic freedom we all need is the cleanliness of hospital and roads and water, as it is the basic aspect and necessity of our life. Free basic healthcare and safe private toilets. Yeah, actually we need the good segregation of waste. For me, it's free sanitary pads. For me, hygiene means be safe in every washroom, and this is what matters to me a lot. What I believe is कि जो हम सैनिटेशन पैड्स वगैरह खरीदते हैं, आई डोंट वांट कि वी हैव टू बी सो कॉन्शियस कि हम उसको एक न्यूज़पेपर में लपेट के ला रहे हैं या फिर कवरिंग इट इन अ ब्लैक पॉलिथिन। हमें आसपास खुद सबसे पहले इनिशिएट लेना चाहिए कि हम खुद ही साफ सफाई रखें। हेल्थ मीन्स टू मी फ्रीडम टू मूव। इफ आई कैन मूव फ्रीली द वे आई वांट, माय बॉडी इज सपोर्टिंग मी, दैट इज हेल्दी फॉर मी। The fact that I can one day just get up and say that okay, I'm somewhere outside and I can just go use a public restroom. I don't think I can ever do that. So freedom in our healthcare is like making our environment clean and maintaining our personal hygiene. It means having the facility of clean toilets everywhere I go and free sanitary pads. That's all. एनडीटीवी डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया सीजन 12वें सीजन के फिनाले में आप सबका स्वागत है। अब इस सफ़र को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ कुछ ऐसे मेहमान जुड़ेंगे जो इस कैंपेन का एक इंटेग्रल हिस्सा रह चुके हैं। I would like to call upon Dr. Neelam Clare. In fact, she's a professor, she's an advisor in the Department of Neonatology, Sir Gangaram Hospital, New Delhi. She's also been awarded with the Padma Bhushan. साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं पद्मश्री अवॉर्डी साई दामोदरन. He's the founder of Gramalaya. Another integral guest who's been part of our campaign, I would like to call upon Neha Dhupia. She's an actor, mother, entrepreneur, and founder of Freedom to Feed. And also joining us today is Mr. Ravi Bhatnagar, Communications and Corporate Affairs Director, South Asia, MENARP, and Africa Record. It's really a pleasure to have you all with us. Thank you all so much. So, Ayushman, we have, in fact, a
Of course, Ravi we have, he's been part of the campaign. Neha's been an integral part. Of course, we have, it's a pleasure to have you with us, Dr. Claire and Mr. Sai Damodaran, integral part when we talk about towards a healthier and a Swachh Bharat. Neha, I want to begin with you. You've been an integral part of our campaign. And of course, we've spoken about freedom to feed. We just saw the numbers when we talk about the NFHS 6, that breastfeeding rates have gone down. What changes have you seen? Because it's been nearly 10 years. 2019, you started, Freedom to Feed. When you talk about awareness, acceptance of breastfeeding, while numbers are down, what is the impact you've seen on ground? I think that, firstly, I'm just really happy that we're here on this panel. We're picking up conversations that we need to continuously talk about, and it's so great to see that over the years, we've been able to expand the conversation even more. When I started Freedom to Feed, I had no knowledge, there are things you only understand after becoming a parent, and definitely breastfeeding was one of them. And the impact that I've seen, firstly, Freedom to Feed stands for normalizing it. It comes with no judgment. It's not like you have to breastfeed. If you can't, then you're not good enough. If you have to go back and bounce back to work, or if you're using formula, there is a problem. But yes, the numbers have dropped. The numbers have dropped for multiple reasons, and the reasons are many, right? Women need to bounce back to work. There's not enough supply because there's so much influx of different kind of formulas in your face. You're like, bahar jao, you're like, ye de do bachcho ko, ye de do bachcho ko. Then mums also don't have a choice sometimes, and sometimes they use the choices that they have. And therefore, the numbers have gone down. Are we huge advocates of breastfeeding? We are, but we are larger advocates of normalizing it. We're advocates of the fact that we need to have more and more conversations around it. More importantly, not sexualize it. This is not a thing that you need to... I remember that it was about when our daughter was like 8 months old, and I was just like, where do I go and feed? And we were in a mall somewhere, and they were like, yahan kar lo, bathroom mein. Why? So, you need the conversation to normalize it. And the more you normalize it, it just enables women to do it more. So workplaces, for one, or just bouncing back to work and then saying that, okay, I can express, and then I can make sure that I could go back and, feed my children. So there is a balance, and one way or the other, you need to find it. Actually, very true. We need to normalize it because it's something which every mother, like you said, of course, it's a choice. One wants to do it because of certain reasons. I'm sure, Dr. Claire would agree on that. But before we move on, to ask about breastfeeding, I think, Ayushman, you have a more important question. Of course, Dr. Claire, stunting, wasting has reduced, but malnutrition is still a huge challenge. एक तरफ कुपोषण है, दूसरी तरफ obesity और lifestyle diseases हैं. तो India's double burden of malnutrition का सामना कैसे करें? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ malnourished चिल्ड्रन जो स्टंटेड होते हैं, वेस्टेड होते हैं. स्टंटिंग ऑफ कोर्स लाइफ लॉन्ग आपकी हाइट छोटी हो जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा है ये जो लोग सिवियरली वेस्टेड होते हैं, उनका इम्यून स्टेटस पुअर होता है, डिजीज़ की ज़्यादा चांसेस होते हैं, एंड डेथ विथ सिवियर वेस्टिंग there is more risk of death. But fortunately, अगर हम NFHS, that's National Family Health Survey का डेटा देखें, 5 जो 5 साल पुराना है और 6 जो recent है, कुपोषण कम हो गया है. Stunting and severe marasmus, severe wasting जो है वो कम हो गई है. लेकिन एक कैविएट है इसमें छुपा हुआ राज है कि स्टारवेशन इंडिसेस अभी भी कम नहीं हुए हैं. जब हम 6 महीने से 24 महीने विच इज़ लाइक इन्फेंसी उनकी डाइट देखते हैं तो वो डाइट पुअर है. उसका एक कारण है कि ब्रेस्ट फीडिंग रेट्स कम आ गए हैं. हम उस मुद्दे पे जाएंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग रेट्स क्यों कम हो गए. बहुत सारे नेहा जी ने बहुत अच्छे से एलैबोरेट किए हैं, कुछ अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस और कुछ वैसे. लेकिन ये 6 महीने से 24 महीने तक जो पीरियड है, जैसे डेवलपमेंटल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये 1000 डेज हैं, फर्स्ट 1000 डेज हैं, विच इज़ अ विंडो टू द ब्रेन डेवलपमेंट. सो ये बच्चे जो हैं जिनकी ब्रेन डेवलपमेंट, बिकॉज उन्हें खाना तो मिल रहा है लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जिस तरह से मिलनी चाहिए उसकी फ्रिक्वेंसी या न्यूट्रिएंट रिच खाना जो है वो नहीं मिल रहा है, तो इनकी ब्रेन डेवलपमेंट नहीं अच्छी होगी. तो कुछ एक इंडिसेस
हेल्थ इंडिसेस जो हमें ये बताते हैं कि देयर हैज़ बीन स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, जैसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 90% चली गई हैं, इसका मतलब लोगों को फेथ हो गया कि अस्पताल में डिलीवरी करनी है, घर के अंधेरे कमरे में औरतें नहीं डिलीवर करती हैं। बच्चों को पहले 2 दिन पैदा होते ही देखा जाता है, न्यूनेटल मोर्टालिटी नीचे आ गई है, इम्यूनाइजेशन रेट्स ऊपर चले गए हैं। लेकिन आई थिंक द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। एंड एक जो नारा हमने दिया कि इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझाना बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ केयर इज़ इम्पॉर्टेंट, रीच ऑफ द हेल्थ केयर इज़ इम्पॉर्टेंट, रीचिंग इंटरवेंशंस लाइक हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं, इम्यूनाइजेशन एक इंटरवेंशन है, मैंने अचीव कर लिया 80% 90%, लेकिन न्यूट्रिशन किसने देनी है? मदर ने। और मदर क्या है कि अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है, छोटा बच्चा, तो चलो उसे दूध पिला दो, बट दूध कंप्लीट फूड नहीं है, पूर्ण आहार नहीं है। और क्या होता है कि ये विशियस सर्कल है कि बच्चा खाता नहीं है, उसे दूध दिया जाता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, अनीमिया हो जाता है, और अनीमिया जो है एक बहुत बड़ा हर्डल है फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट। हमारे यहाँ पे प्रेग्नेंट मदर्स, इन्फेंट्स में इंसिडेंस ऑफ अनीमिया बहुत हाई है। अनफॉर्चुनेटली NFHS 6 में अनीमिया का डेटा अभी नहीं आया, लेकिन वो देखना बहुत ज़रूरी होगा। सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन कि कुपोषण की रोकथाम तो हुई है, हम उसे नीचे तो ले आए हैं, स्टंटिंग को नीचे ले आए हैं, लेकिन अगर आप बड़ा बारीकी से देखें तो अभी जो क्वालिटी ऑफ डाइट उस पीरियड में जब बच्चे की डेवलपमेंट होती है, ब्रेन डेवलपमेंट होती है, अभी भी इनएडिक्वेट है। और क्या होता है कि अगर बच्चा ठीक से डेवलप नहीं होता है न्यूरोलॉजिकली या फिजिकली, देन they are not productive to the family, to the country, and that's a loss for the country. Dr. Claire, very well Focus said. on the nutrition of these first 1,000 days, which is a window to the brain development. And this is very important for the families, for the individuals, for the communities to know. And for the breastfeeding, I would just add that, we have to become very, very natural and comfortable about breastfeeding. Yes, I can't agree. Sorry, I'm interrupting, but that's why normalizing it. It's just like, even when I was talking about it excessively, it's just like, क्या ज़रूरत क्या है बात करने की? I feel like अगर आवाज़ है, उठाओ, use it in the right direction, and I feel like you also become a voice for multiple people, and the same way when they're looking at you, you're like, अगर ये बोल सकती तो मैं भी बोल सकती हूँ इसके बारे में. And there was so much change that I've seen in the 9 years. I may have stopped feeding my kids, but there's so many conversations that Conversation is happening, right? I mean, yes, that's important earlier. and highlighted in so many different ways. It's joyous. There are times when I wake up and वो कहते हैं ना, Instagram या social media is like a vortex. It sucks you in. और नहीं खोलना चाहिए because कोई उठ के योगा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, you're like अभी 9 बजे आपने कुछ नहीं किया. But when I open the Freedom to Feed page, I get DMs and I see moms who are like, they reach out or they talk about their journey और कितना उनको फर्क पड़ा, how they've gone back to work, or even corporate setups. They're like, ये देखने के बाद 3 साल बाद पहले बच्चे के वक्त कॉर्पोरेट सेटअप्स में नहीं था ब्रेस्ट फीडिंग रूम, अब है. And I'm hoping NDTV has one. Yes, food. Great. It's so great to hear that NDTV has a breastfeeding room, and It's very important. it's crash. It's very important. Because it is important. I mean, as mothers, right? I mean, self-care is important. You don't want to have the guilt feeling. I think we've all been through that stage. Yeah. It's more in the urban Yes, that's where. area. Nobody looks at a breastfeeding. Yeah, they are more empowered there. Yeah. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. I just feel like even in rural areas, they're so empowered. मतलब वहीं पे, like even if you go to a tea plantation, वहीं पे they're feeding their kids, वहीं पे वहाँ पे पीछे लगा लिया बच्चे को, फिर काम पे चल गए. ये जो बाधा है, अड़चन है, interruptions हैं, ये होती नहीं है. I feel like, I'm not saying it's smooth as butter, but there is a huge mindset change that needs to come, and it's coming in here now. It's the 12th season, I mean, finale है, और आज इंडिपेंडेंस डे के दिन हम ये चर्चा कर रहे हैं. फ्रीडम हमारा ज़रूर हो गया आयुष्मान. We talk about colonial rule. We may be a free country, but when it comes to diseases, yes, numbers have improved. जैसे डॉक्टर क्लेयर ने कहा, हमने पहले भी numbers देखे थे, but still we have a long journey to go. असली freedom क्या होती है? जब when every child, we ensure every child has food to eat, and there's so many aspects, whether it comes to educating every child, the basic
right? साफ पानी होना चाहिए. So journey of course चल रही है, and that's the reason our campaign has been trying, over the last 12 years, that's what we've been trying to focus to ensure that freedom from every aspect of life. Yes, I really think so. That freedom from every aspect when it comes to basic rights, like you said, whether it's shelter, whether it's cleanliness, whether it's food, whether it's vaccination, whether, जो भी हो, but it shouldn't be कि इस बच्चे को मिल रहा है और इस बच्चे को नहीं मिल रहा है. It's the access to it or the route to it or whatever. I feel like children all across should be given basic food, medical aid. It needs to get to the most grassroots level, and no one should be left in a space where they can't achieve it or they can't have it. यहाँ आपको इस बात को देखकर अच्छा लगेगा कि we are not just even talking about this. ग्रासरूट लेवल पर जो इंसान काम कर रहा है वो है रवि भटनागर, और साल दर साल ये क्या करते आए हैं. It's been 12 years now. Looking back at 12 years of बनेगा Swachh India journey, and how has this 2014 launch of Swachh Bharat mission shaped its impact, and what lessons do you think stand out कि collaboration between public campaign और national policy में है, कितना आगे बढ़ के लेके आया आपके लिए? Thank you so much, Ayushman, for asking this question. But first thing first is thank you, NDTV, as a wonderful partner to us. Voices do matter, and the decibel also matters. I am well aware, there is a long way to go, but each brand we work with at Reckitt tries to give the health in people's hand. And I remember the launch of Banega Swachh India, and then the transition from Swachh to Swasth. I really feel like, a lot has gone into shaping the work across India, and I'm very proud, we have around work in more than 350 plus aspirational blocks in India right now. And all the work is intertwined. It's not a standalone hygiene program. It's not a standalone sanitation program. It's not a standalone breastfeeding program. But the work focuses on the health outcomes. And when I say about the health outcomes, Neelam ma'am, you just spoke about the first 1,000 days. Neha ma'am, you just spoke about, breastfeeding. Damodran sir has been working tirelessly on the sanitation. You have been lending us the voice and increasing the decibel. And Ambika being a wonderful anchor. When we started our journey, we were just in 2,500 schools. And there was a big challenge, like how we make sure our work stays. And the nudges are so strong. We touch around 1.4 billion people across India. The interventions designs are made in a way where the interventions are nutrition-sensitive interventions. The interventions are not just nutrition-specific interventions, which also have something like, basic things like kitchen gardens. You have the breastfeeding pods, Neha ji, if you remember, like we discussed it in the past. Then we talked about, we saw the numbers of the urinary tract infections among the girls in the schools and in the absence of the toilets and the clean toilets. And we saw every girl, every boy should have the full potential to achieve. And if we do our efforts towards Viksit Bharat, there'll be more players, more sports person, more youth who will be more healthier. There'll be better health outcomes for the country. And overall on the Human Development Index, the country will move up. A very small example I want to give you. Studies say if, most of the girls who are getting trained for the sports, they don't reach to the podium. It's not just because of the opportunity, it's also lack of sanitation and hygiene. Because you drink less water. You don't pee. You feel like, the safe toileting also becomes gives a pushback to move. Your body is cramped, you are dehydrated, you want to win. And we really want girls, boys equally and all need to reach to the podium. So all these efforts, first 1,000 days, then, the work what we do with the youth,
the work we do on hygiene, sanitation, self-care, this all pushes and elevates the stature of, the public health in India. There are some direct interventions and which are clinical, and there are certain which are non-clinical in nature. There's a lot of focus what we have put on the preventive health in India. And I really think like preventive health is a big foundation. Otherwise, the big hospitals, especially the tertiary care, will be fulfilled with the long queues of people who will be unhealthy in the times to come. True. Again, I just want to take a pause because I just see this at the background, Swasth Bharat, Viksit Bharat. The definition of Viksit is also freedom from hunger, freedom from disease, it's improvement in the HDI, it's how the personal disposable incomes of the people actually grow, it's out-of-pocket expenditure on the disease actually reduces, and there are around many other indicators. True. So in fact, what you said, I think preventive rather than curative, that's the way to go forward. लेकिन जब what happened in 2014, if we just revisit, जब प्रधानमंत्री ने लाल किला से स्वच्छ भारत का संकल्प किया, तब मिशन बहुत सीधा था, इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना. अब और उसमें देश ने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव भी किया, करोड़ों में शौचालय बने और 2019 तक भारत ने खुद को ओपन डेफिकेशन फ्री अनाउंस किया. लेकिन फिर फोकस बदला क्योंकि सवाल उठा, क्या सिर्फ टॉयलेट बनाना ही स्वच्छता है? अगर गांव में कचरा पड़ा रहे, नालियों में गंदगी हो, पानी जमा हो, तो हेल्थ रिस्क वापस आ सकते हैं. इसीलिए शुरू हुआ नेक्स्ट फेज, ओपन डेफिकेशन प्लस. सही कहा आयुष्मान. और ODF प्लस यानी कि ओपन डेफिकेशन प्लस का मतलब है ना सिर्फ खुले में शौच से मुक्ति, बल्कि पूरे गांव को साफ, सस्टेनेबल और गंदगी से फ्री बनाना. चलिए देखते हैं एक जर्नी जो 2014 में हमारे प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था और आज हम कहां तक पहुंचे हैं. 2 अक्टूबर 2014, लाल किला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन का आगाज किया. पूज्य बापू ने हमें संदेश दिया था, फिट इंडिया, क्लीन इंडिया. लक्ष्य था खुले में शौच को खत्म करना और हर घर तक शौचालय पहुंचाना. अगले कुछ सालों में देश भर में करोड़ों शौचालय बने, लेकिन ये सिर्फ टॉयलेट्स बनाने की कहानी नहीं थी, ये लोगों की जिंदगी बदलने की कहानी थी. 2019 भारत ने खुद को ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर किया. सैनिटेशन की जर्नी में एक हिस्टोरिक माइलस्टोन, और इस बदलाव का असर हेल्थ पर भी नजर आया. बेहतर सैनिटेशन और हाइजीन ने डायरिया जैसे इन्फेक्शंस का बोझ कम करने, बच्चों को बेहतर शुरुआत देने, महिलाओं की सुरक्षा और डिग्निटी बढ़ाने और गांव में स्वस्थ जीवन की बुनियाद मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई. आज स्वच्छ भारत सिर्फ सफाई का मिशन नहीं, एक हेल्थ मिशन भी बन चुका है. एक ऐसा आंदोलन जिसने दिखाया कि जब सफाई और सैनिटेशन बेहतर होती है तो देश भी ज्यादा स्वस्थ बनता है. Let's go across to an Indian public health specialist, scholar, environmentalist, and 2014 recipient of the Padma Shri, Dr. Indira Chakravarti, who has been an integral part of a campaign since we launched it. Dr. Chakravarti, you have witnessed decades of change in the public health space. When we talk about freedom from diseases and the pursuit of better health, what milestones have we truly achieved? Ashwin, I think that's in a way a very easy question and a very difficult question to answer. Because if you compare between the NFHS 5, which was 2019 to 21, and NFHS 6, which was 23 to 24, we do find some significant achievements. For example, ARI, acute respiratory tract infection, which is the highest killer disease in children, has come down from 2.8 to 1.9%. Severe diarrhea has also come down from maybe 0.7 to 0.5%. Reduction in diarrhea has just made a very small effect.
very small dent, hardly anything, 7.3 to 7.5. But what I would like to say is that the child stunting, which was a very hardcore problem, has started a trend of reduction. From 35, it has come down to 29 approximately, which is low height for age. Child wasting, which is low weight for height, which is short term, while stunting is a long term deprivation. Child wasting has also marginally come down. Serial wasting has come down more significantly, from about 7.7 to 5 point something. High blood pressure has also come down, which is a major problem in the population. So some have given a small dent, some have come down significantly. So these are a couple of things in public health we give a lot of importance. From the SRS data, which is between three SRS data. One was 14 to 16, 2014 to 16, 2018 to 20, 2020 to 22. Maternal mortality rate, which was a severe problem, which is 130 14, 16, has come down significantly to 88. Though we need to do a lot more. 88 is also pretty high. Infant mortality rate, which was very high in 14, 16 to 39, has come down to 25 now, which is less, but we needed to do better. Under 5 mortality rate, which was 45 in 2014, 16, came down to 30 in 18 to 20, but it has significantly come down now to 29. So we find these three major, indicators of public health, like maternal mortality rate, infant mortality rate, and under 5 mortality rate, have all come down to significantly reduced numbers now. But we definitely, compared to other developed countries, and I would consider we are a developed country now, we need to do it. We definitely need to do it. Dr. Chakravarti, while we have achieved so much in the journey towards freedom from diseases and better health, could you share what gaps still remain and what more we need to do to actually be a truly Swachh and Swasth India? I think we need to, if you want me to sort of say very briefly, what are the things that we need to work more for, which we still consider as big problems, is underweight. That children when underweight has not changed at all. And I think how to reduce this underweight. Well, wastage stunting has made a small dent, but underweight it hasn't. So we need to, it's a combined effect. And where again, I would say wash plays a very important role. Diarrhea needs definitely much more work, because diarrhea is something like a leaky pot. You put nutrition and it comes out before. It's not absorbed, not assimilated. So the entire nutrient is lost. So diarrhea is another very important thing. It's a big gap for us. We need to improve on that. Stunting wasting, as I said, has made a dent, but we need to do much more work on that. And one more problem for which the data is pending from NFHS 6, hopefully it will come out very soon, is anemia. Anemia has been a huge public health problem in many respects. Right now, we don't have the latest anemia data, but whatever we have till 2005, till the NFHS 5, it hasn't improved much. So we are waiting for the NFHS 6 data to come to see how anemia does. So anemia is another very, very important thing. And I think that is what we need to do. So what you see from on that is from the public health inputs that needs to be put in now, and not any medical issues. What you need to put is like supportive issues. For example, wash, as I mentioned, it reduces infection if you have proper wash. It reduces entry of infective agents inside your body. The wash, if you have proper wash. And overall, healthy habits are very important. Like hand wash is one of the most important things. You have a lot of pollution around you, but if you keep your hands proper and clean by proper soap hand washing, infected agents do not enter inside your body. And if they don't enter inside your body, you are not going to have disease. So to prevent
infections entering inside your body, it's very, very important that you keep yourself clean. And for that, hand washing is a priority. Clean toilets, having keeping your toilets clean, hygienic, is another very important thing. I think these are facts which will prevent infection to coming. And if you prevent infections from coming in, disease rate is automatically going to drop. Syed Namuddin ji, you've been an integral part. हमने देखा कि ODF की ये journey जो रही है, लेकिन आपने the role you started, you've really pioneered the work in making a village in Tamil Nadu open defecation free way back. I mean, I would say decades back. When you began your sanitation mission, did you imagine that this movement will grow to the scale of what today Swachh Bharat mission has become? And what was the biggest lesson जो आपने सीखा? Yeah, thank you so much. In fact, the first ODF village was announced in 2003 in a rural village called Tandombatti village in Tamil Nadu near Trichy. That was recognized by the World Bank and UNICEF and other government bulletins. So from that, it was in 2003, but in 2014, the Swachh Bharat Mission program was launched by our Prime Minister Narendra Modi ji. Prior to that, if you look at over the 30 years of the statistics, if you take, every year there will be a minimal increase in the toilet coverage at the household level. Even though Central Rural Sanitation Program, centrally sponsored sanitation program like that. It started from Central CRSP, then TSC, Total Sanitation Campaign, Nirmal Bharat Abhiyan, so many other programs launched by the then Prime Ministers. But 2014, when Prime Minister Modi ji started the Swachh Bharat Mission program, the coverage of sanitation increased in the rural as well as in the urban through Swachh Gramin and Swachh Urban projects. It has drastically increased every year. It was stating from 30% to 40%, 50%, 75%, 100% like that. Yeah. Now we are talking about ODF plus. Not only that village should be open defecation free, but also the village should be solid and liquid waste management should be a part of that one. Waste free villages, even menstrual waste free village we have declared in the schools and in the urban rural areas. So that much of importance now being given for Swachh and Swachh Bharat. That is a great part of that one. So India has made a remarkable progress in sanitation. Where do you think we stand today? And what is the next frontier? Is it clean water, waste management, behavior change, or climate resilient sanitation? What is it? Yeah. Now, apart from the rural villages being declared as ODF, also ODF plus. Now the schools are being declared as menstrual waste free school. That means every girl in the schools should not be using the use and throw sanitary napkins. Instead, they go for eco-friendly menstrual products. They can reuse the menstrual pads, which is made out of cloth pads. They can wash it and reuse it, so that the waste will not be thrown into the public, polluting our environment, land and water sources. That is a major part of it. Apart from that, through RECIT, we have been started working in climate resilient schools. We are giving much importance for the tree planting, water conservation activities. Even now we are working for desilting of existing ponds and tanks, so that women can get access to water facilities. Also more water, groundwater recharge in the rural areas. That part of water conservation activities as well as climate resilient schools, tree planting, environment, eco-friendly activities, we have started working with RECIT. Wow. Yeah, so it's, what started with sanitation, like Ravi said, Banega Swachh se jo shuru hua tha, and how it's linked to health, how it's linked to the, when we talk about the country's economic progress as well. Well, on that note, we'll take a really short break. And when we come back, I think we'll look at the different angles, I think what freedom means to each one of us. So please stay tuned on this Banega Swasth India special on Independence Day. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं NDTV डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया कैंपेन का इंडिपेंडेंस डे सीजन 12 फिनाले और चर्चा हो रही है ऑन फ्रीडम फ्रॉम इलनेस।
Exactly, Ayushman. Freedom from illness is not just a human right, it's an economic imperative. In fact, diarrhea is the largest contributor among waterborne diseases, which together caused about 17 million cases between 2021 to 2025. Acute diarrheal disease remains a leading cause of child mortality under the age of 5 in our country, unfortunately. Yes, Ambika. So every child saved from preventable diseases like diarrhea is not only a life preserved but a future contributor to the nation's growth. डायरिया एक ऐसी बीमारी जो रोकी जा सकती है लेकिन आज भी हजारों बच्चों की जान ले लेती है. साफ पानी, सैनिटेशन, हाइजीन और टाइमली इंटरवेंशन, ये सब बदल सकते हैं तस्वीर, और यही BSI का मिशन रहा है. Absolutely. और हम since we are talking on these critical conversations, Dr. Claire, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हमारे डायरियल डिजीज जो डेथ्स हैं बच्चों में, they've reduced, right? पर जो neonatal hospital infections हैं, that is still a big challenge. Whether it's hand washing, whether it is, the conditioning in hospitals, training, how can we bring about a change in that aspect as well to protect our children? So infections in the newborn, they account something like 1/4 of the total deaths. So if there are, let's say, 60,000 deaths, out of that, about 20% is because of infections. And the reason behind infection are multiple. एक तो inherent है कि newborn जो है उसमें immune status poor होता है. So उससे बीमारी से लड़ने की इतनी क्षमता नहीं होती है. On top of that, जो sick babies हैं, जो intensive care units में हैं, उन पे बहुत सारे procedures होते हैं. और उनकी वजह से they are more prone to have infections. But even जो बच्चे healthy हैं, normal हैं, अगर cleanliness नहीं होती है, cleanliness at the time of delivery, labor room में, afterwards, if the healthcare professionals are not washing hands, if the women are not washing hands, they are not hygienic, they are not taking baths. Another thing which is predisposing is increasing rates of cesareans. The cesarean rates are alarmingly increasing. WHO says that 10 to 15% are the normal rates. If they go beyond that, then it is a surgery which is harmful to the mother and the newborn. But unfortunately, our cesarean rates are to the tune of 40%, even more than 40%, to the tune of 60%, 70% in private facility as compared to the public health facilities. So combined with all this, if we do not maintain the hygiene, if we do not have proper facilities for hand washing with soap and water, then this, something which is very simple. In fact, hand washing सबसे simple और सबसे effective तरीका है. बिल्कुल. One way of preventing infections. Yes. So हैंड वॉशिंग सबसे सिंपल है, हैंड वॉशिंग सिंपलेस्ट भी है और सबसे पावरफुल टूल भी है. ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ डायरियल डिजीज इन इंडिया एंड ग्लोबली. In fact, the connection is very direct. Contaminated hands spread pathogens into food. They spread into water. They fuel outbreaks, and we've seen that. We've seen it very closely. Regular hand washing with soap can reduce diarrheal cases by up to 40%, making it one of the most cost-effective public health interventions. As India work towards the goal of freedom from illness towards a विकसित भारत, मैम आप बताइए कि और क्या additional steps लेने जाने चाहिए जो बच्चों को protect कर सके. Right. आपने बात की कि भूख से मुक्ति, freedom from hunger. I think today the question is not of availability of food, it is of the right choices. And I'm not only talking about adults, I'm talking about children also. I work in a rural area of Rajasthan. There's so much of malnutrition. And the reason is that women don't have time to cook because वो जंगल में जाके लकड़ी चुनती हैं और बच्चों को पता क्या मिलता है? पार्ले जी और कुरकुरे और चिप्स. So it's the choice of the, क्योंकि micronutrient deficiency, which is anemia, I'll again and again hamper because that's very important for the brain development. अगर आप हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, चावल आटा दाल की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन हरी सब्जी की कमी होती है किचन. हरी सब्जी बनाने की कमी होती है. इवन पीपल हु आर अफ्लुएंट घर पे खाना भूल गए हैं, दे ईट मोर ऑफन आउटसाइड एंड मेनी अ टाइम द चॉइसेस आर अनहेल्दी. सो आई थिंक right from beginning, the right choices, that's very important. Then hygiene including your personal hygiene or your toilet hygiene.
बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो शुरू से बच्चों को स्कूल से ही सिखानी चाहिए कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोना है. Which was a very beautiful initiative by the school programs of Swachh Banega Bharat. Yeah. So, because if you put something in a child's mind, will never forget. Another thing which has happened, which is going to improve the healthcare of children, is the education of the mother. Yes. Enabling them to be more digital friendly. One thing which has come up in NFHS 6 is that the number of women who are internet friendly has increased. Women who have independent, their bank account has increased. So, like the social securities and the welfare schemes, they come straight to the mother. Yeah, which actually... So there are no patriarchal gatekeepers. And I think an important point here, of course, we're talking about, whether it's mothers, fathers, all of us play a critical role in bringing out good children, future citizens of our country. लेकिन अब हम डायरिया की बात करें तो चाहे डायरिया हो या कोविड जैसे चैलेंजेस, आई वांट टू हियर पुट आउट एक ऐसा नेटवर्क है जो हर दिन लड़ता है, जो हमारी आशा वर्कर्स हैं. वो एक हेल्दी इंडिया के सोल्जर्स हैं. आज हम उनसे मिलेंगे, उनके किट्स देखेंगे और समझेंगे कि उन्होंने अपने गांव में क्या बदलाव लाए. So if we can please have the ASHA workers join us here today. I think, please आइए ma'am. So Ravi, हमने देखा है, we've all seen, I think during COVID, the critical role they've played, and not just, I think, COVID, the World Health Organization has also felicitated them and seen the kind of work. They really are the thread to ensure that community healthcare reaches these are ASHA workers. In fact, हम आपसे कुछ चर्चा करना चाहेंगे. If you can share with all of us, आप जो काम ग्राउंड पर करते हैं, घर घर जाके, उस काम के बारे हम सबको जरा बताइए. Okay. First of all, thank you to NDTV and thank you all of you for calling us here. I'm feeling very honored. Thank you so much for this opportunity. हम लोग BMC से हम लोग एज अ हेल्थ वर्कर हम लोग काम करते हैं आशा वर्कर के तौर पे. आई एम वर्किंग सिंस 12 years इन द BMC. वी आर वर्किंग लेवल स्लम्स में हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं. हम लोग चाइल्ड एंड वीमेन जो होते हैं उनके हेल्थ के लिए हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि इम्यूनाइजेशंस हो गए. देन मैम ने जैसे बताया कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है तो उन्हें हम लोग बहुत सारे मतलब फर्स्ट विजिट से लेके उनके एंड तक जितना उनका प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन रहता है तब तक हम उनको बहुत सारे सलाह देते हैं. बहुत सारे उनके जो ट्रीटमेंट्स रहते हैं, बहुत सी चीज़ें रहती है, लाइक प्रेगनेंसी से लेके बच्चा कंसीव होने से डिलीवरी तक जो भी चीज़ें होती है हम लोग उनको, मैम ने जैसे बताया ब्रेस्ट फीडिंग, तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का, ये इम्पोर्टेंस हम लोग उनको समझाते हैं. और बच्चों में मैल न्यूट्रिशन ना हो इसके लिए हम लोग उनको हेल्थ टॉक वगैरह देते हैं. और बहुत सारी, जैसे अभी बारिश का मौसम है तो सीजनल जब होते हैं सीजन, बारिश का मौसम होता है तो बारिश में बहुत सारे डिजीजेस होते हैं, तब हम लोग बहुत एक्टिवली हम लोग काम करते हैं उसमें भी, बारिश में भी. ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अभी रिसेंटली पोलियो है तो आशा वर्कर्स एंड जो CHVs है, कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर्स, उनकी वजह से आज हम वी कैन से प्राउडली कि हमारी वजह से आज भारत पोलियो मुक्त होने जा रहा है या फिर हो रहा है. I think we need to, yeah. So I'm very I think नहीं, आप कह सकते हैं. I mean you can definitely say that. हमने देखा कि जितना काम जो हमारे पूरे देश में ये आर्मी ऑफ आशा वर्कर्स हम इन्हें कह सकते हैं, सोल्जर्स ऑफ आशा वर्कर्स है. इनफैक्ट द सैनिटेशन वर्कर्स हैव आल्सो प्लेड अ वेरी क्रिटिकल रोल. और इंडिपेंडेंस डे में वी डोंट हैव अ सैनिटेशन वर्कर unfortunately joining us, but they've been part of our campaign. They have played a very very critical role. In fact, कोविड also man he did बट चैलेंजेस क्या आते हैं आपके? चैलेंजेस में बहुत सारे होते हैं, लाइक समटाइम्स पीपल जो होते हैं हमें रिस्पॉन्स अच्छे से करते हैं. कुछ लोग होते हैं जो सीधा विदाउट आस्किंग एनीथिंग, उनको लगता है कि हम लोग कुछ सेल करने के लिए है तो सीधा दरवाज़ा मुंह पे बंद कर देते हैं. लेकिन बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं हम फेस करते हैं, बट वी डोंट बॉदर अबाउट इट. हम घर से यही सोच कर निकलते कि नहीं, हम आज हमें कुछ करना है, हम सोसाइटी के लिए वर्क करते हैं एंड हमें करना है, दैट्स इट. हम बाकी की जो चीज़ें हमें रुकावट देती है उनको हम ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं. बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे काम में,
जैसे बहुत सारा वर्क प्रेशर भी होता है कि एक काम करते तब दूसरा कॉल आ जाता है कि आपको ये भी करना है साथ में। अभी बारिश का मौसम है तो बहुत वाटर लॉगिंग वगैरह हो रहा है तो उसमें लोग जाते हैं, तो उनके प्रिवेंशन के लिए उनको लेप्टोस्पायरोसिस या ऐसी कुछ बीमारी ना हो तो प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए हम लोग उनको डॉक्सी की मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करते, तो हमें फिलहाल हम लोग ये कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, चैलेंजेस भी बहुत आते हैं, बट हम ज्यादा उनको भी बॉदर नहीं करते, आप बढ़ते चले जाते हैं। आई मीन फ्रॉम एनडीटीवी डिटॉल हम सबकी तरफ से आज यहाँ जो बैठे हैं, वी गॉट पद्म भूषण, पद्मश्री, वी गॉट नेहा, आयुष्मान एंड रवि जो ग्राउंड पर काम करते हैं। थैंक यू, हम दिल से आपको धन्यवाद करना चाहेंगे। But before we end this सलाम segment, करना चाहेंगे। आज हम इंडिपेंडेंस डे पर हमारे हीरोज को एक स्पेशल पिन देंगे, बनेगा स्वस्थ इंडिया ऑनर्स। ऑल द आशा वर्कर्स विल बी गेटिंग दैट पिन, द स्वस्थ आजादी पिन। ये उनकी कंट्रीब्यूशन का सल्यूट है। लेट्स वेट फॉर द आज हमारे साथ यहाँ पे 4 आशा वर्कर्स हैं, बट हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे दिस इज फॉर द all the ASHA workers in fact are working tirelessly in our country. Can we please have the pins, and can I please request you all to please pin them? I can think we can start with you, Dr. Claire. You can pin our first worker, and Sai Damodan ji, aap bhi aaiye. And I think start with please. Thank you so much to Asha ma'am. Please आइए, and of course even our sanitation heroes for them as well, and the Asha workers. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सीजन 12 फिनाले एनडीटीवी डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया कैंपेन का। ये इंडिपेंडेंस डे स्पेशल है, लेकिन नाउ इट्स टाइम टू स्विच गियर्स। थोड़ा फन, थोड़ी मस्ती एंड थोड़ा सा नॉलेज, क्योंकि आज हमारे साथ है आयुष्मान जो क्रिएटिव भी है, थॉटफुल भी हैं, रोडीज के विनर भी रह चुके हैं, और दूसरी तरफ है नेहा धूपिया, रोडीज से लेकर रियल लाइफ तक मुझे पता है दोनों बहुत कंपेटिटिव है। सो आई ऑल रेडी फॉर दिस? तो हमने सोचा व्हाई नॉट टेस्ट कौन ज्यादा जानकार है हेल्थ और सैनिटेशन पर। दिस इज अ बजर राउंड वेयर वी हैव अ क्विक फायर रैपिड फायर क्वेश्चंस ऑन हेल्थ, हाइजीन एज वेल एज एनवायरनमेंट। सो आयुष्मान एंड नेहा, यू गाइस रेडी? दोनों के साथ आप देख सकते हैं हमारे पास 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। आई मे बी थिंकिंग छोटे देखते कितने नॉलेजेबल हैं। दे आर यंग चैम्प्स ऑन ईच साइड। सिंपल रूल, सवाल होगा हेल्थ और हाइजीन से जुड़े, और आपको बजर दबाना है द मिनट यू ऑल नो द आंसर। रेडी? Ready for it? Ready guys, say yes. बच्चे आप रेडी हो? Thumbs up. ओके, पहला सवाल, कौन सी हैबिट इलनेस से बचने में आपको हेल्प करती है? सोप और अरे सुन तो लो पहले, दोनों नहीं, इलनेस से बचने के लिए हम आंसर सुनो तो सही। सोप और पानी से हाथ धोना, मील स्किप करना, टूथब्रश, क्या था? ये बज ही नहीं रहा है। सोप और पानी से हाथ धोना। ओके, दैट गोज टू हर। बट ये बजे तो सही ना? ओके, ये कैसे बजर? फिर से टेस्ट करिए। मैं नहीं, वो आयुष्मान चीटिंग 1 पॉइंट गॉन। बजर कैसे दबाते हैं? लेफ्ट हैंड से। ओके, पहला पॉइंट में या बहाने मार के? ओके, पहला पॉइंट नेहा का। आयुष्मान Yeah, रेडी फॉर चलो। द नेक्स्ट वन। हाथ कब धोने चाहिए? खाने से पहले और टॉयलेट के बाद? यार मैं आंसर दे दूं? बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। ओके, सो अरे यार बज ही नहीं रहा है। बच्चे आप ट्राई करना बजर, शायद आयुष्मान का हाथ उनको अच्छा नहीं। मनूस है। हाँ, नहीं शायद ना, आप दबाना, ठीक है बच्चे? ओके, so नेहा इज 2, आयुष्मान इज येट टू, खाता शुरू होना बाकी है। तीसरा सवाल है, हाथ कितनी देर तक धोने चाहिए? 20 seconds. ओके, आयुष्मान का Listen, come on. ये तो ही इज कैंपेन एम्बेसडर, ये तो पता। अच्छे बच्चों की तरह बजर 2 बार दबा चुका, आंसर भी मुझे पता था। ओके, उससे ज्यादा टाइम तो उनके बजर दबाने में लगता है 20 सेकंड। ओके, चौथा सवाल, कौन सी चीज ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बचाती है? ऑप्शन सुन लीजिए, क्या आंसर है बताइए? अनयूज्ड अप्लायंसेस स्विच ऑफ करना, सब कुछ को ऑन रखना, फ्रिज बार बार खोलना। अनयूज्ड अप्लायंसेस स्विच ऑफ करना। टाई। पर बजर नहीं दब रहा हमारा। ओके, दिस इज अ टाई, फेयर इनफ। क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी बचा रहे हैं और अप्लायंसेस नहीं दबा रहे हैं, तो ये पॉइंट भी उनको दे दीजिए। चलो टू ऑल। थैंक यू। पांचवा सवाल, एनवायरनमेंट के लिए कौन सा बैग बेटर है? रीयूजेबल क्लॉथ बैग, सिंगल यूज प्लास्टिक, कि हर बार नया पेपर बैग? रीयूज। आंसर देने दो यार। हाँ। नेहा इनको बोलने दीजिए। रीयूज। रीयूजेबल। माइक उठा के बोलो। माइक उठा के। रीयूजेबल बैग। ओके, सो 3,
2. 6th question. शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बच्चों ये आपको जीतना पड़ेगा ये वाला सवाल। पहले ही दबा के बैठी है औरत। ये मैंने पहले ही बोला था कि बहुत कुछ ऑप्शन से मेरे को आंसर पता चल जाएगा ना। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सबसे इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट क्या है बच्चे? बाइसिकल, कार, मोटरसाइकिल। बोलते दिया, हो गया, रिकॉर्ड हो भी गया, हमारा आंसर रिकॉर्ड हो गया। आप अगले सीजन में आइएगा बजर दबाने। हमारा बजर खराब है, ये चेंज करो यार। वो फायर नहीं कनेक्ट, हम बजर लेके जा रहे हैं। ओके लेट्स बच्चे दबा के देखो। ये बाइसिकल वाला हमें मिला। अरे क्या? जस्ट प्रेस योर्स, चेक करिए। प्रेस। आयुष्मान, there's something wrong with you. I swear. इन्होंने हाथ नहीं धोए ना, वो बजर हाथ धोया। जरूरी है मैं हाथ धो के। इसमें तो मैं 2 बार चेक कर रही हूँ, चल रहा है। ओके थैंक गॉड ये तो चल रहा है। नहीं वो भी चल रहा है। राइट वाला हाथ धोया है ना। नेक्स्ट सवाल गाइस, कम ऑन। नेक्स्ट सवाल। नेहा 4, आयुष्मान 2। बच्चों आपको नेक्स्ट वन लेना पड़ेगा। प्लास्टिक बॉटल्स का क्या करना चाहिए? रिसाइकल करना चाहिए प्लास्टिक बॉटल्स। ये बजर नहीं दब रहा। This is karma, You guys. think there is? और उड़ाओ मजाक। That's the fun of this. That's the fun of this. 3 and 4. ब्रशिंग के वक्त पानी कैसे बचाना चाहिए? ऑप्शन दीजिए। ऑप्शंस पीछे है, देखिए। पानी कैसे बचाना चाहिए? टैप बंद करना चाहिए, टैप चलता छोड़ देना चाहिए, एक्स्ट्रा पानी यूज बंद करना चाहिए। यार बच्चों को चांस टैप दीजिए। बंद करना चाहिए। आप बोलिए। ये मेरा माइक उठा के आप बोलिए। नो शी सेड इट। टैप सेड इट बिफोर। इतना फोमो ठीक नहीं है यार। करना चाहिए। वेरी गुड। क्या सवाल? जवाब दिया क्या? वाह। वेरी गुड बच्चे। आपका नाम? इशिता। So Ishita got it right. किस स्कूल से आप? प्रभा देवी। क्या बात है। ओके वेस्ट कम करने के लिए क्या करना चाहिए? आप पीछे ऑप्शंस भी देख ये सकते दे हैं। दिया, दे दिया। बताइए। दिया, मैंने बजर दबा दिया। रीयूज और एक बात बताओ, ये इस साइड में प्रॉब्लम है, यहाँ बजर दबी। यूज रिसाइकल। ये सवाल आप बताइए। अब जो मैंने बोला वो बोल दे। इनको भी चांस दो बोलने का, हमारे बच्चों को। हाँ बोलिए जोर से। रीयूज, रिसाइकल। क्या बात है। रिसाइकल करना चाहिए। ओके नेक्स्ट वन आपको आंसर करना है। ये जो आपका नाम बताओ। ही इज ऑल एक्साइटेड। आयुष्मान यू नीड टू मेक श्योर यू प्रेस द बजर बिफोर आई फिनिश द क्वेश्चन। प्लैनेट के लिए कौन सा बेटर है? आपने दबा दिया। बता दो बाबा। आपने नहीं बोला ना, आप बोल दो। अपनी वाटर बॉटल कैरी करना बोल दो। अपनी वाटर बॉटल कैरी करना। 11 पॉइंट्स। Can I change my hand, guys? आयुष्मान को बजर दबाने के लिए क्या करना चाहिए? I don't know यार। आई थिंक आपको एक बार हाथ अच्छी तरह धोने एक बार फिर से आप। ओके नेक्स्ट वन लेट्स पहले वाले फिर से करो यार, हमें आंसर सबके पता है। ठीक है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने me, की let him try. रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? हम सबकी, सिर्फ गवर्नमेंट की या एनवायरनमेंट ग्रुप्स की? सबकी। दो सी बच्चों से भी दब गया। मेरी दैट्स आई थिंक अ ग्रेट आंसर। हम सबकी। ही स्टैंड्स फॉर आई थिंक द यूथ ऑफ आवर कंट्री। Yes. बोला मेरी हम सबके लिए। वेल दैट वाज अ फन गेम और ऑफ कोर्स नेहा जीती है। सिर्फ एक गेम नहीं था नेहा। यही तो जीते। नहीं आयुष्मान और नेहा ये सिर्फ एक गेम नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि हेल्थ और हाइजीन की बेसिक बातें हमें सेफ रखती हैं। एंड आई थिंक आवर किड्स आल्सो नो दैट, और डिजीजेस से हमें आज़ाद रखती हैं। थैंक यू सो मच बच्चे, आप आए हमारे साथ खेलना। आप इनफैक्ट विनर्स है, पर आप भी विनर्स है बिकॉज आई थिंक you know what he said कि मेरी responsibility at that age to realize it's his responsibility towards a cleaner and healthier India. Thank you so much बच्चे, आप हमारे साथ जुड़े। Thank you boys. Thank you. girls. थैंक यू गाइज, यू आर अमेजिंग। आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। जो सब बच्चे हमें देख रहे हैं, जो सब माँ बाप देख रहे हैं, रियली वेल डन। Yeah, and I think, you know, on a platform like this, it's not just about fasters, finger first. जैसे आयुष्मान का तो खैर बजर उनसे नहीं दब रहा था, हम सबसे दब रहा था। लेकिन it's also about how informed our future generation is. Yes. The kids of our countries, इनको पता है क्या उनके लिए सही और क्या नहीं है। Well, thank you all so much. We'll take a really short break. But when we come back, we're going to be having this conversation even more in detail and lots of fun with our kids today. Thank you so much. मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू ऐ वतन। 1947 में हमें आज़ादी मिली थी। कई लोगों ने अपना आज हमारे कल के नाम कर दिया था। अब 2047 भी दूर नहीं, लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा है कि हम कौन सी आज़ादी छोड़कर जा रहे हैं।
खुली हवा में सांस लेने की आज़ादी या मास्क से समझौता कर लेने की, साफ पानी पीने की आज़ादी या हर बूंद को परखने की, सेहत को आदत बना लेने की आज़ादी या इलाज को ज़रूरत बना देने की, बच्चों के हाथ मिट्टी से रंगे होने की या हर चीज़ को छूने से पहले सैनिटाइज़र यूज़ करने की, अपने बच्चों को उम्मीद देने की आज़ादी या उनसे माफ़ी मांगने की। आखिर हम कौन सी आज़ादी छोड़कर जा रहे हैं? नदियों को बहते देखने की या सिर्फ किताबों में उनकी तस्वीरें देखने की, पेड़ों की छांव में बैठने की या एयर प्यूरिफायर के आसपास जीने की, सुबह चिड़ियों की आवाज़ से खुलने की या एम्बुलेंस के सायरनों से, खुले हाथों से लोगों से गले मिलने की आज़ादी या हर लम्हे किसी वायरस से डरते रहने की, अपने बच्चों को सिर्फ जिंदा देखने की आज़ादी या उन्हें सेहतमंद देखने की। आखिर हम कौन सी आज़ादी छोड़कर जा रहे हैं? क्योंकि आज़ादी सिर्फ सरहदों पर नहीं बचाई जाती, वो बचती है घरों में, आदतों में, उस हाथ में जो अपने आप को साफ रखता है ताकि किसी और को प्रोटेक्ट कर सके, उस नल में जो वक्त पर बंद हो जाता है, उस पेड़ में जिसे काटने से पहले कोई एक बार सोच लेता है कि आखिर इसका असर क्या होगा, उस माँ में जो अपने बच्चों को सिर्फ ABCD ही नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाती है, और हर उस बच्चे में जो समझता है कि सेहत सिर्फ मेरी नहीं होती, हवा सिर्फ मेरी नहीं होती, पानी सिर्फ मेरा नहीं होता, और इसीलिए भविष्य भी कभी सिर्फ मेरा नहीं हो सकता, ताकि जब 2047 आए हमारे बच्चे सिर्फ इतना ना कहें कि हमें एक आज़ाद देश मिला था, वो ये भी कहें कि हमें साफ हवा मिली, साफ पानी मिला, सेहत विरासत में मिली, और जीने के लिए सिर्फ एक सुंदर देश नहीं, एक बेहतर कल मिला था। हमें एक ऐसा देश मिला था जहां सेहत भी आज़ाद थी। जय हिंद। Thank you so much, Priya. Thank you so much. Thank you, Really thank a you. pleasure. Priya, I think Ayushmann, she's. How beautifully written and recited. Thank you. Look who's talking. I mean, I had the pleasure of having two really creative people, and I'm going to come to that question. But Ayushmann, I want to tell you, she's especially, written this for our campaign. That's amazing. So I think we're really grateful for that. Thank but what you. were your thoughts, Priya, when you were writing this? Now that I'm a mother, and I'm sure you all can relate to it as well, I have started thinking about the planet very differently. Like, I don't want my son to live a life where he's dependent on an air purifier or always be masked up. Yeah. And I really think seriously about this when I see my friends' children being born during COVID and the lives that they have led. And I think that is what has made all the difference. So when I was writing it, good poems flow to you like water. Yes. And this was one of them, because ये बात जहन में हमेशा रहती है आपके कि आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, घर, गाड़ी, बंगले, फिक्स डिपॉजिट के अलावा आप कैसी एनवायरनमेंट दे रहे हैं, क्या विरासत में दे रहे हैं उन्हें. That, So yeah. that definitely leaves us to think as well कि हम अपने बच्चों को, future generations को विरासत पे exactly सही चीज़ क्या दे रहे हैं और क्या देनी चाहिए. But I want to ask you both, in fact, Ayushmann, Priya, आप दोनों अलग-अलग mediums में काम करते हैं, music, poetry, and Ayushmann, of course, you're an actor as well. लेकिन दोनों के थ्रू स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग होती है. आज के टाइम में क्या आप कॉन्शियसली चूज करते हैं कि आपने किस मैसेज को एम्पलीफाई करना है, एंड हाउ डू यू डिसाइड on the topic that you really want to speak about? How do you decide the cause that you want to lend your voice to? Priya, would you like to take that first? I am very conscious of the idea that I do have a voice and there are people listening. And I think as public figures, we can all relate to that idea as well, because लोग सुन रहे हैं, लोग देख रहे हैं और लोग समझ भी रहे हैं. And you have to be very conscious of the topics you choose about. I can never write about something which I don't passionately feel about. There are times when commissioned writing comes to me and I have to put my soul into it, because if I don't put my heart and soul into writing, then वो दिखने लगता है. Audience are your biggest दिल judge. से आना वो दिल चाहिए. से आना चाहिए. And Ayushmann, your I thoughts? think biggest thing about an artist is that they can create value through their art. और जिन फिल्मों का मैं चयन करता हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ कहने की बात होती है उसमें. एंड आई बिलीव दैट फिल्मों से बदलाव लाया जा सकता है, कला से, आर्ट से बदलाव लाया जा सकता है. आई बिलोंग टू अ थिएटर बैकग्राउंड, और वहाँ पर नुक्कड़ नाटक हम करते थे. बहुत ऐसे सब्जेक्ट्स को चूज़ किया करते थे जहाँ पर हम कुछ कहने को होता था, कॉन्वर्जेशन स्टार्टर होती थी. अब वही आई थिंक इट्स प्रॉब्ली वो ट्रिकल डाउन हो गया मेरी फिल्मों के ज़रिए. जो फिल्मों में मैं चूज़ करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी फिल्में बनाई जाएँ जो लोग देखकर कुछ महसूस कर सकें, कुछ बदलाव आए, कुछ परिवर्तन आए समाज में. और अगर वो थोड़ा सा भी होता है
So I think you are a winner as an artist. Absolutely, and I think the topics which you've always chosen, have that strong messaging. I mean, at the end of the day, you want to tell your viewers something out there. And like I think what Priya said, जो भी आप messaging, जो आपको दिल, what you connect with your heart, that's what comes through. Why don't we, see it? In fact, for our viewers, you're watching the NDTV Detol BSI Independence Day special. ये हमारा 12th season का finale है, which makes our campaign one of India's longest running public health campaign. और अब हेल्थ और हाइजीन के बाद इस सेगमेंट में हमारा फोकस है एनवायरनमेंट पर, क्योंकि आज़ादी का मतलब है एक स्वस्थ भारत जहां हर बच्चा सुरक्षित हो, हर माँ निश्चिंत हो और हर परिवार एक हेल्दी एनवायरनमेंट में जी सके. Exactly, Ayushman. And, to take this conversation further, of course, we have Priya with us. Thank you so much, Priya Malik, for joining us today. Let's begin with the latest AIM study on climate resilient schools. एक वार्निंग भी है और एक रास्ता भी. फ्यूचर प्रूफिंग हमारे बच्चों के लिए जरूरी है. For over a decade, Detol Banega Swasth India has been at the forefront of improving public health and sanitation across the nation. But as our world changes, so do the challenges facing our children. In vulnerable regions like the Himalayas, where landslides, flash floods and water scarcity are a constant threat, environmental disruptions directly impact a child's health and education. To tackle this, the mission has evolved, taking on the powerful intersection of climate change, hygiene and youth well-being. Introducing the Climate Resilient Schools Initiative. Operating on a holistic 3C framework, campus, curriculum and collaboration, the Detol Climate Resilient Schools program is working into safe, sustainable sanctuaries. And the impact is real. An independent evaluation by AIMS Rishikesh confirmed dramatic improvements in the pilot schools. Students in these resilient campuses showed significantly higher hand hygiene habits, better knowledge of sanitation, and cleaner drinking water access. The results were clear: lower rates of illness, better physical growth, and zero reported waterborne diseases. During this study, multiple interventions which are focused on the climate resilient were implemented. They have integrated the curriculum, they have included the A to Z dictionary of climate resilience. Then they have also ensured that multiple climate resilient infrastructure like availability of safe and regular water, availability of clean toilets in which regular water supply and soap availability is there has been ensured. So they have come out to be very useful for meeting out the challenges of the climate in Uttarakhand. By turning classrooms into beacons of climate resilience and public health, we are not just protecting today's education, we are safeguarding tomorrow's future. One school, one community at a time. And we just saw the work done in Uttarakhand, the CRI schools. Just take us through the work on CRI schools or report जो AIMS Rishikesh की आई है review. So, thank you so much. We did a lot of work on first understanding which state needs us first as the investments are limited. So we thought we will choose a state where the vulnerabilities in terms of the climate risks are maximum. We studied the number of avalanches. We studied the number of landslides. We saw how the water tables are getting dipped. We also saw what has happened to the states in India in a decade. And we could conclude it's very important to focus on Uttarakhand first. And in Uttarakhand also then we saw what's happening to the Char Dhams. And in the Char Dhams we saw the traffic is now tremendous. There is very beautiful highway network, whole of Delhi, Gurgaon and North India. They're up in the hills just to explore. So the footprint is very huge, the carbon footprint which is happening. We thought from where to start. And we chose our destination as schools. And we chose 4 schools across Uttarakhand, which NDTV has covered. And we thought people will challenge us is there is something which has really changed after your work?
So the big surprise to us is like, once we commissioned the study, an independent study with the AIIMS Rishikesh, we could see like the schools which are where the intervention happened on the climate and the climate change. The schools are better prepared. The kids have a higher level of knowledge. Even the disease, which actually, is triggered by various natural calamities and by the climate change, there's a significant difference between the schools which were, where the intervention happened and where it didn't happen. The whole concept was working through collaboration with the government of Uttarakhand. We're very thankful to Dhami ji and his whole team and the governor of Uttarakhand who gave us this opportunity first time. There is a, radio station there called Oho Radio. So we worked very closely with RJ Kavya. And lot of songs, lot of music, lot of local, tales were actually done through the junior RJ program, junior radio jockey program through the Oho Hill Yatra. And we learned a lot in the whole process. And we are continuing our efforts. And we plan to, take it to all the 13 districts of Uttarakhand this year. And you are going to see from 4 schools to a big footprint to all the 13 districts. What we see, which is very different from the other interventions, is actually there are no instant results. So you need to have the longitudinal studies to actually understand what has been happening. We took very baby steps having the fruit-giving trees in the school. We have fodder-giving trees in the school, shade-giving trees in the school. And that too, people are trying seed bombing, using drone, etc., etc. We thought we have grown up with pencils and erasers. Yeah. We started with the pencils, the seed pencils. As soon as the pencils end, you just plant that pencil of this seed into the school. And now in 2-3 years, it has now grown up. Yeah. So there's a natural flora and fauna. The state bird of Uttarakhand is Monal. We have seen in Uttarakhand, in Uttarkashi especially, the Monals have started coming back to the schools. Wow. It's not me saying, it's the bird watchers they are saying. Yeah. And this gives us a lot of hope also. And we also see something which is very contradictory. When a peacock was found at the highest peaks in Uttarakhand, which makes us very disturbing because that's not the phenomena. It's same someone was spotting hornbills in Delhi in one of the parks few days back. Yes. And saw a colored hornbill there. Yeah. Otherwise, Delhi has one nesting, which has a grey hornbill. Yeah. So it's an intersection of basically, the animals, humans, and planet. And it's very interesting how the whole work is coming up, and we are going to put something together with the AIIMS Rishikesh, which may be a center of excellence on hygiene, health and climate, which we will bring to the audience when we meet again on 2nd of October. In fact, what Priya, Ayushman, what Ravi just shared, I witnessed it during the launch. So, the pencils and, the kind of retrofittings which have been done in the schools. And I visited the schools. And, when I met the kids recently again, what all they've learned. And especially in a place like Uttarakhand, which is so, vulnerable when it comes to climate. You're hearing of landslides. And aapne bachcho ki baat ki. I'm from Uttarakhand, by the way. I'm from Dehradun. So you can totally So I can totally relate to everything you're saying. And, when we were growing up in the 90s, Dehradun used to be this very beautiful city, I've grown up with trees, we used to walk on the roads and jo aap keh rahe hain, पेड़, छाया, सब कुछ मैं ऐसे ही वहाँ पे बड़ी हुई हूँ. Now when I go back, it's a different city. Yeah. So I'm so glad that work has started, specifically from a place like Uttarakhand, which is one of the most beautiful states we have out there. So thank you for doing what you're doing. I wish sparrows come back to Chandigarh. Yeah. जब मैं छोटा था, तो sparrows इतने होते थे चंडीगढ़ में. My childhood was full of sparrows, but they are not there anymore. Because cell radiations or variety of factors. But what you're doing is truly commendable. सबसे अच्छी बात लगी कि आपने junior RJs जो introduce किए हैं, given the mic and the opportunity to the young kids to express themselves. एक कलाकार का एक अंदर से रूह होती है कि आप कुछ बदलाव के लिए कुछ किया जाए. जैसे हम प्रिया के साथ डिस्कस कर रहे थे. Yeah. हाँ, so प्रिया, आप एक मॉम भी हैं.
अब बच्चों के बाद आई थिंक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है. क्लाइमेट चेंज सडनली पर्सनल फील होने लगता है. Yeah. यू हैड मेंशन दैट बिफोर. आई थिंक आप दोबारा कहना चाहेंगे उसके बारे में. यस क्योंकि जब हम पहले बात करते थे कभी भी मेरे हस्बैंड और मैं कहती थी यार यू नो आई ऑलवेज वांट टू बी अ मॉम एंड करण यूज्ड टू बी लाइक ग्लोबल वार्मिंग का ज़माना. आई एम श्योर यू हैव ऑल हर्ड दैट राइट, लाइक व्हाट वर्ल्ड आर वी ब्रिंगिंग आवर चिल्ड्रन इन. एंड आई थिंक दैट क्वेश्चन डिड नॉट हिट मी बिफोर आई बिकेम अ मॉम. आई वाज लिविंग दिस आइडियलिस्टिक वर्ल्ड सेइंग हाँ सब ठीक है, सबके बच्चे हो रहे हैं, हम भी कर लेते हैं. But now when my son was born, I've started feeling very differently about the environment. You know, everything, whether it is the air quality, whether it is simple things around our house. We moved homes after my son was born because I wanted him to be brought up against in the midst of trees. जो बॉम्बे में आपको नहीं मिलता. हमने स्पेशली ऐसा घर ढूंढा जहाँ आसपास पेड़ हो, जहाँ उसके पास बैकयार्ड हो, जहाँ वो पौधे लगा सके, पौधों के बारे में सीख सके. एंड आई थिंक ये डिफरेंसेस आ जाते हैं व्हेन यू बिकम अ पेरेंट. यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग नेचर बिकॉज हैविंग अ चाइल्ड इज सच एन environmental thing in itself as well. So yes, that has definitely been a change. And then you're more conscious and mindful about all the decisions you take. As parents, you know, I think we're all parents, but specifically for y'all as artists and as individuals, of course, this planet is something, I think, Ravi, you'll also agree, we need to share with our next generation. Aapne pehle bhi baat ki thi, as a parent, you know what we feel. I want to ask you both, Priya and Ayushman, I would request you if you would like to share a few lines on protecting our earth for the future. अगर आप कुछ शेयर करना चाहेंगे अपने जहन से environment के लिए. आई थिंक यही सवाल हमेशा जहन में आता है कि हम कौन सी आज़ादी छोड़कर जा रहे हैं. यू नो, साफ़ पानी पीने की आज़ादी, साफ़ हवा की आज़ादी, वो आज़ादी जो वो सचमुच में महसूस कर सकें. तो हमेशा मेरे जहन में यही सवाल आता है कि मैं क्या विरासत में दे रही हूँ अपने बच्चों को. And that is a question that has always stayed with me as a parent. So that leaves a thought, I think. एक मैं इस पे लिखा था मैंने कुछ, सेहत, मेहनत, हुनर और अदा. सेहत, मेहनत, हुनर और अदा, और आखिर में उसकी रज़ा. सबसे पहले लेकिन सेहत आती है. आपके हुनर से पहले, आपकी मेहनत से पहले, और आपकी स्टाइल या अदा से पहले. और आई थिंक सेहत से ऊपर कुछ नहीं है. जब तक आप एक हेल्थियर एनवायरनमेंट नहीं देंगे फ्यूचर जनरेशन्स को, तब तक कुछ हो ही नहीं पाएगा. लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स आर नॉट इवन बिकमिंग पेरेंट्स बिकॉज ऑफ दैट. कि हम किस शहर में रह रहे हैं, कैसी जगह में रह रहे हैं, AQI यहाँ इतना बढ़ गया है. सो दे आर चूजिंग नॉट टू बिकम पेरेंट्स बिकॉज ऑफ दिस. हम इस हालात में पहुंच चुके हैं. So I think it's very imperative that we have to think about the future generations. It starts now. और आपने जो बात कही सेहत की, राइट रवि, दैट्स व्हाट आवर कैंपेन हैज बीन टॉकिंग. क्योंकि हमने रियलाइज किया स्वच्छता ज़रूरत है, लेकिन किस तरह सेहत से कनेक्टेड है. तभी ये कैंपेन हमें जो आज 12वें साल में है, तभी बनेगा स्वस्थ इंडिया, राइट? Ambika, I want to add something very interesting. As this is a big journey of 12 years, you know, like Jiva is one of our very important partners, which is Global Interfaith Wash Alliance. And you have been interviewing Swamiji from last many years in Rishikesh. Muniji, he is fondly called, at Paramarth Ashram. It was, you know, first conversation with him where he said, like, can we have the crematoriums which are wood-free? Can we wood-free crematoriums? Okay, yeah. Yeah, and I asked him, like, okay, तो फिर ashes का क्या करेंगे? कि he told, like, इसमें तो nitrogen भी है, इसमें तो phosphate भी है. So जो हमारे जब parents या जो भी हमारा love वो नहीं रहते, then you know, आप पेड़ लगाइए और उसी यही जो last जो remains जो आपका बचता है ना, जो ashes हैं, उसी को उसके अंदर आप डालिए ताकि वो, और उसको अपना नाम दे दीजिए कि किसकी मेमोरी में आप लगा रहे हैं. I thought, like, ये सच में होता है क्या स्वामी जी? He said, I can show it to you. I said, ठीक है, देखने चलते हैं. And he took me to the places and we saw it firsthand ourselves. We thought, like, you know, if this is one of the things, like, you know, अपने जिसको आप प्यार करते हैं उसके नाम पे आप पेड़ लगाते हैं, that remains forever. यही कॉन्सेप्ट जब हम बच्चों के पास लेके गए इन अ वेरी डिफरेंट वे, द फर्स्ट इनिशियल क्वेश्चन वाज लाइक, यू नो, क्या पेड़ों में जान होती है? यू नो, देयर इज अ पर्टिकुलर वे हाउ साइंस इज टॉट टू अस. देयर इज अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यू नो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस टू एक्चुअली मेक किड्स सी हाउ एक्चुअली ट्रीज ब्रीथ, हाउ दे आर कनेक्टेड. There is a very young lad, she is studying in Stanford University,
She's in her third year now. And she created something called Kiara Kits for us. We took those kits to the kids so that all these experiments where you can actually see, like, the plants actually live, they breathe, and it's not just a textbook subject. Yeah. So we could do that, we could demonstrate that. And I will also like to put on record, Government of India has put some very fabulous infrastructure, especially to learn. So like you have the Forest Research Institute in Dehradun. FRI. FRI is there. So we went to the schools. We work in around 1,300 schools across Uttarakhand right now. We asked the kids, have you heard about it? No. We asked teachers, do you know about it? Some of them said yes, but never visited. We thought, like, have you ever seen the flora and fauna which is there? Have you seen a tree which is 200 years old, which has, the various circles, each circle actually telling you a story? Yeah. You have more than 300 varieties of butterflies there in that place. Yeah. So we could bring the kids near to the nature at the FRI to give them the science-based education, and then taking them back to their schools and to their societies and to the forest to do the nature walks, so that they journalize it what they have seen in the FRI, and they can connect and relate back. That's the beauty of a culture. Because sometimes we can change our traditions, our norms according to what's happening around, and we call Mother Nature, धरती को माँ कहा जाता है, और जो माँ के हित में सही है वो होना ही चाहिए, जैसे स्वामी जी की बात की. एंड देयर वाज दिस प्लेस इन ज्योतिसर जहाँ पर वो पुराना पेड़ है जहाँ पर कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था. इट्स लाइक hundreds and hundreds of years old. तो our school trip was there. तो ऐसे ट्रिप्स और होने भी चाहिए. So well, now let's. learning होता है. Absolutely. I'm surprised that those kids have never been to FRI. हमारे स्कूल से हमें annually FRI लेकर जाया जाता था. And just to add to what you were saying, Ayushman, I think आगे बढ़ने के लिए पीछे देखना बहुत जरूरी होता है जिंदगी में. So basically, the effort is towards the humanizing this whole, better health in more hands. So that's what we aim to. Absolutely. Well, now let's quickly look at the bigger picture of health. क्या solutions हमने achieve किए हैं और कौन से gaps अभी भी बाकी हैं? अगर हम सच में freedom from illness चाहते हैं तो हमें systems, policies और community practices को और strong बनाना होगा. Exactly, and then that's why I want to go across to Mr. Neeraj Jain. He's been supporting our campaign since our launch in 2014, and he's also been part of our telethons. Air pollution remains a major public health challenge. From your perspective, how can innovative solutions and community engagement help mitigate its impact on children and vulnerable populations, sir? Thank you, Ayushman. This is a wonderful question and a very, very pertinent one at this point, considering where we stand on the air pollution record in India. It's a complex challenge because it's driven by multiple sectors. Transport hai, industry, construction, waste management, household energy, agriculture. How do we save our children and vulnerable population? It requires coordinated action. Emissions bhi kam karne hai aur logon ka exposure bhi kam karna hai. Innovation cannot be viewed only through the lens of technology, and that's unfortunately one of the things that we do at times. It includes smarter policies. Governance needs to really improve. Data को कैसे use करेंगे, service delivery कैसे strengthen करेंगे, innovative financing और communities को कैसे बीच में लाएंगे. We're already seeing these innovations in practice. Transport में cities adopting electric buses all over. जैसे कि लंदन में एक ultra low emission zone बनाया है. Industry में गुजरात ने पहला emissions trading scheme बनाया. नॉर्थ इंडिया में zigzag brick kilns बने हैं जो significantly emissions को reduce करते हैं, but they also improve fuel efficiency. In agriculture, there are lots of innovations such as Happy Seeder and Pusa decomposer, जो कि practical alternatives देते हैं crop residue burning को, जो एक large problem है. और cities like Indore have improved their waste management that can reduce open waste burning. एक और enabler जो है वो है data. इंडिया की जो air quality monitoring और forecasting system है, that's getting better and better. It's identifying pollution hotspots, prioritizing interventions, and issuing timely health advisories. This enables governments as well as citizens to make more informed decisions. Equally important is community engagement. The community is at the center. This goes beyond awareness to empowering people as partners in the solution rather than just in terms of the people who are affected. A digital reporting platform or behavioral campaigns जो हैं वो they encourage cleaner transport,
and responsible waste management. Ultimately, हमारे बच्चों को और vulnerable जो populations हैं उनको innovation चाहिए technology में, policy में, governance में, community participation में. And most importantly, ये सब एक साथ अगर काम नहीं करेंगे, we will not get the cleaner choices, which are actually the easier choices. Thank you. Well, Ravi, you received many recognitions and awards over the years, and most recently the Chakra of Change. 12 years is a long journey, but also a huge responsibility. So what's next for the Banega Swachh India campaign, and how do you see it evolving from here? First of all, thanks to NDTV, thanks to you and all the well-wishers. And special thanks to Gaurav, who is our EVP, and our global CEO, Chris, who has given an opportunity and a very important task to me. So, world is one place now, as we see, as One Health. And the plan is to take the Banega Swachh India to the other countries and the other regions which I take care of. Also, when I talk about India, it's about the democratizing hygiene, democratizing sanitation, making sure programs stay, there's a strong sustenance. And we have we have our well-wishers who join us in this journey. As you know, journey will be very skewed if just we as a corporate try, and we miss civil society, we miss press, we miss media, we miss politicians. And some of the great inspirations throughout my journey would have been, Dr. Kalam. When I started this whole program at Dettol Banega Swachh India, the first curriculum on the STEM-based education was co-created with Dr. Kalam, which we took to thousands of schools. Second person who has really inspired me is Nitish, who is the president of emerging markets at Reckitt, with whom, we've put the first foundation of Banega Swachh India, and we first time reached to 2,500 schools. Then someone who is a very big challenger, who is my current EVP, he challenged me like India is a country of 1.4 billion people and at least reach 10 million kids. And now, by the virtue of our program, we touch lives of around 30 million kids across India. We did one of the biggest Olympiad on hygiene. Like you may have heard about the Science Olympiad, Maths Olympiad. We were able to do the Hygiene Olympiad 2 times where 10 million kids actually participated. Fourth is like our own Prime Minister himself. Why so? Because he was the first person who gave the maiden call from the Red Fort on Banega's making India clean and infusing the life back on making sure like we are no less than Singapore and other countries. And we could declare ourselves free. Next is 2 Chief Justices who have awarded me for the work what I have been doing, KG Balakrishna ji, and recently the ex-Chief Justice Chandrachud ji, a few days back in Mumbai. Change of age. So, of change. And subjects ranging from disability and hygiene, disability and health, reaching out to the milestone, last mile, leaving no one behind. So every one of this has inspired, and not less like, everyone has come from the womb. My mom has a very important role to play. How she actually, nurtured me, sent me to the boarding school for the longest time. And then definitely my lot of colleagues in Reckitt who work with me day in and day out so that we do the right thing always without compromising any ethics. So ethics is very important and very deeper. What Ravi said, that's the reason why today our campaign is one of the longest running public health campaigns, because it's just not about talking. I can personally say it as a journalist, as being part of the campaign, going to these places to actually witness what is being done and showcasing it, right? I mean, that's what's important. Ravi has been relentless. Yes, Ayushmann. He always has this spark in the eye when he talks about all the achievements, and stats are there and favoring us now over the years. So I think it's very commendable. I can see the passion. Yeah. In fact, Priya, I think even for you, thank you so much. I think really want to thank you for writing that something specifically so beautifully for our campaign. It's really been a pleasure. Thank you for lending your voice. Thank you so much, Ravi. And
Congratulations on the award. Of course, we're going to be working and looking forward to October 2nd. Well, before we wrap, let's do something a little fun. Ayushman, I hope you like solving puzzles because next one... I used to. It's been a while now, so yeah. So let's give it a shot. So चलिए एक quick puzzle try करते हैं. I'm going to call our students here. ये एक puzzle है जो अलग-अलग bits of information है. इन्हें हमें साथ जोड़ना है और जब हम इसको साथ जोड़ेंगे, a very strong message is going to come out of that for all of us and for a healthier India. And I would also, of course, I have Ravi and Ayushman with our kids. I would also like to call Dr. Vivek on stage to help us solve this puzzle. चलिए आइए. Let's go. Solve करते हैं. Could we please have Dr. Vivek and thank you. Ravi, Dr. Vivek and Ayushman, this is the puzzle is the puzzle for us. वहाँ pieces पड़े आपके पीछे, Ravi. What are your thoughts on something like this where the kids... This is the best part. I think last time भी यही किया था, बच्चों को साथ में एकत्रित करके कुछ ऐसा किया था जिससे वो सीख सके. जी. और अपने hands को हमने वहाँ पे किया था. And what's the name of the activity? Color जो हमने... Yes. We played with the bricks. Yes. We did the hopscotch together. Absolutely. Yeah. तो ये end इससे कर रहे हैं जहाँ पर बच्चे कुछ सीख भी सके और खेल भी सके. एंड ऑल दीज मैसेजेस आर रियली रियली इंपॉर्टेंट. और आज़ादी का मतलब यही होता है कि सिर्फ हम अपने देश से प्यार करना तो हर कोई करता है, देश के लिए कर क्या रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है. और बच्चे अगर सीख जाएं तो आगे जाकर देश के लिए बहुत कुछ हो सकता है. एक्चुअली छोटी छोटी चीजें, दिस मे बी अ स्मॉल थिंग बट लाइक यू राइटली सेड, बच्चे ही हमारा फ्यूचर है. एब्सोल्युटली. आज के दिन पर हम अक्सर आज़ादी को याद करते हैं बिकॉज इट्स 15th August. बट रियल फ्रीडम सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं होती. असली आज़ादी तब होती है जब हम अपने देश को डिजीज फ्री और सैनिटेशन स्ट्रॉन्ग बना पाएं. और जब हम एक ऐसा भारत बनाते हैं जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे, जो रिजिलियंट हो, तभी हम आज़ादी को ट्रूली लिव करते हैं एवरी सिंगल डे. बनेगा स्वस्थ इंडिया, बनेगा स्वच्छ भारत और तभी बनेगा एक सच में स्वतंत्र भारत. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष